So good afternoon. Myself Dr. Vijay Meena, and I'm Senior Business Scientist CSR CSIU. So when we talk about Industry 4.0, so there are 10, 12 different technologies which we say will disrupt the economy. So 3D printing or additive manufacturing among one of them. So additive manufacturing, common people know it is a 3D printing. So it's a group of different technologies in which we build from scratch, we add material. People from engineering background might be able to see this 2D drawing. So if you remember our olden days, we used to have a drafter and we used to draw using pencil, we used to make designs on the chartboards. But later on then came CAD softwares, Inventor, AutoCAD, SolidWorks, etc. But with the changing times, changing technology, so we wanted something to feel before it get actually manufactured. So then came the idea of 3D printing. Even if we see what happens is this kind of a part, if we go to any common man, so he will not be able to imagine how this part looks like. So prototyping gave an idea of how the part will look before it gets actually manufactured. So additive manufacturing or 3D printing. So this is the current conventional one. We take a block, subtract it one. Additive. In start we don't have anything, then we keep on adding materials as per the CAD model and we get a 3D printed part. So inverse of what we were conventional doing. So all of you have seen any carpenter working on it. So what he takes is he takes a big block of wood, then starts working on it. So it's subtractive, additive. We don't have anything, we keep on adding material to get the desired part. So let's talk about what are the myths and realities of additive manufacturing. So people think 3D printing, we have a 3D printer, we make a file, we get a part, usable part in it. But there are a lot of myths associated with it. The first is, people think 3D printing is one technology. It is not the case. If you look at a whole image, so there are more than 100 technologies of 3D printing. So all those technologies has been categorized in 7 different times, whether it's FDM based, powder bed fusion. So this is not a single technology, it's a group of multiple technologies. So you can be expert in 1 or 2 technologies, but being expert in all the 7 different kind of technologies is not possible. So multiple technologies, commonly they are known as 3D printing. So another thing is, people think, especially in the case of metal, I have a printer, I will design my part and will get a usable part. So here you can say these are our own printed parts. So there are a lot of support structures. So pointer hai? It's okay. So if you can see, this is a finished part, this was as printed part. So there are a lot of support structures are there. So we design the part, we put into the machine, we get it out of the machine. But before getting to this form, usable form, what we have to do heat treatment. We have to do finishing, we have to polishing, and we have to remove these supports by chisel, hammer or wire cut. So there are a lot of post processing is required to get a usable part. So then again, people think 3D printing is expensive. Typically, it is expensive, but it depends upon what kind of part you are printing or what kind of feature it has. Suppose for any people knowing about injection molding, the typical molds, a complex mold sometimes takes months to manufacture. But if you have 3D printer, you can make it in 1 week. So indirectly you are saving on time. Sometimes there are various features in a part which require multiple setups. Sometimes you have to go for turning, sometimes you go drilling on a single part. But if you take a part and design it according to 3D printing, it can be cost effective also. So this is an example of a LED heatsink. So total parts were 3, you can print multiple parts in a single job also, 384 parts in one. Total build time was 444 hours, 30 hours, and part, if you were manufactured single time, the cost of $40, the cost reduced to $4. So if you choose your part collectively, we call it part staining for a particular process, and you print as much as possible. So it is going to be much more cheaper than conventional, but your part has to be correctly stained. So again, I basically work on orthopedics, medical implants. So whenever we go to a doctor, the first question, is the 3D printed part is going to be as strong as the conventional machine one?
So this is example of aerospace part, and we all know aerospace, whether any part had to be used in aerospace, it has to go through a lot of qualifications or certification, only then it is being used in aeroplane. So this part is qualified for aerospace engine, and any part technology which has been qualified for aerospace can easily be qualified for other application also. So sometimes you get better properties than a conventionally casted or machined part. So it is not the case of earlier technology when we used to, it is only prototyping. Now we can get a fully functional part from it also. So this is again example of medical implant part properties, and if you see the red line, so red line is the required one, and we get a properties which are much higher than the ASTM standard requirement. So you can get, there is no doubt in the functionality of the technology that you can get better parts from 3D printed. So again, people have 3D printers, people have very fancy softwares, and what they do is they design anything. So if you see, this is a manifold part, again this is a pen, and on the left hand side is a conventional pen, and right hand is a 3D printed pen. So what you can see is a beautiful aesthetically pen, but it loses functionality. So if you see, you cannot hold it. So don't over design it. Just you have a very good 3D printer or you have very fancy softwares, the part should not lose its functionality. You have to always keep in mind. So this is a 3D printed pen, and I also have a 3D printed pen. So this has, I can grip it, I can use it. It has to use that functionality. So it has enhanced the functionality, not disturb the functionality. This always has to be kept in mind. Now, so as already told, there are 7 differently categorized technologies, but some steps are common to all the technologies, whether it's FDM, whether it's metal, polymer, anyone. So first of all, you need to design a part. So for which you can use any software, that's SolidWorks, Inventor, whichever softwares you have, CATIA. So you design a part, then you convert that part into STL file, which is the most commonly used software, which all machines know. So it is just like your image files have a JPEG format or your Acrobat or PDF format. So 3D printer understands STL files. So then what you do is divide the part into multiple layers. We call layering. So you cannot print this whole part in a one go. So what you do is divide into multiple parts. So when we design the part, we use the layer thickness, this is layer thickness of 30 microns, so 0.030 mm. So our here is of around 100 microns, so approximately 1/3 of that. So these steps are common to all. After the slicing, you transfer the part to your machine software. Then your individual technology comes into play. So STL, what is an STL file? It's basically a mesh of triangles, 3 versus 1 normal. So we decide the direction of it. Then again, we have a part, designed a part, and we want very accurate printing. So or sometimes we want the part only for prototype, not for actual use. So if you want your accuracy to very high, you will get a very dense mesh. Or if you want to use only for prototyping, you just want to see how this looks. So you no need of using a very fine triangles. It will increase the data time, processing time. So this is something which you need to decide whether you want to use actual part or you want the part to print it for the only demo purpose. So then, what is staircase effect? So whenever coming to this room, so there are a lot of staircases. Similar is the case with 3D printing. We are printing one layer, then we are adding on it, then we keep adding on. So there is slight shift of layers is there. So this results in inaccuracies or very high surface finish. So this we can avoid by using either orientation or using very fine layer thickness. So what happens is, for doing this step, he was using some kind of supports in the shoe, a nail. Similar is the case with 3D printing. We require a part to build with a support so that it is in printable form. So if you want to print something on FDM part, so if you see black and white, white is the support structure which you have to remove after your part is printing. So it helps in building the part. And below is the metal printed part. So the lower structure is the support structures which has to be removed. But you know, something which has to be removed or it's of no use is all wastage.
but this is something which we cannot avoid when, especially when printing metals part. So just like friction, we cannot avoid friction, but we require also some kind of friction. So but we can reduce the number of supports what we can use. So if we have a part, if I have to print this part, I can align it to 45 degrees. This is a rule of thumbs. So I will not require any support. But if a part is inclined below 45 degrees, I will look at a lot of supports which has to be removed, which require extra effort, and all this material is wastage, which is economically expensive. So if you talk about titanium is 44,000 rupees per kg. So all this material has to be thrown away after your part is printing. So but simply by orienting to 45 degree, I can avoid supports at all this level. Okay. So for holes, the rule of thumb is any diameter above 8 mm will require supports, because what happens is when a part is printing, when this curve meets, so there a lot of heat is there. So there will overhang angle will be there. To avoid this overhang angle, we require support structures. For anything at 90 degree, I will require support structures. So all this is required, but all wastage. So this is our own examples. People think so having a metal printer will automatically give you printed part. So if your parameters, if you don't have knowledge, you don't understand the process, so a lot of failures are going to be there. So here you can see the first part. This one is support. So your support has delaminated because you're printing. They were due to this thermal stresses. Your part has grown up. So ultimately this is going to result in failure of the job. And these are all spinal implants. Here you can see some are printed, some are not printed. Here you can see again support delamination is there. Here you can see inner portion is not printed at all. So it gives the why I showed this images, how you design your supports, how you use your supports, what parameters do you use. Plays equally important. It's not that you have a machine, you will print it. So there are a lot of optimization, experimentation required. Then you will be able to get your finished part. So again, so how to avoid supports? This is an example. So these are practical cases. So can you know what this part is? I think we all know. So we all rode cycles in when we were kids, pedal. So if I have to print this, if I print as such in any printer, so all this will be support, and supports I have to remove it. So all this is essential, but after my part is printed, this is all wastage. So that adds to my cost. So what we can do, if I simply change the orientation. So if you keep in mind the yellow part is reduced. So I have not done anything. I was printing like this. Now I'm printing like this. So a lot of support structures has been removed. So again, what are other things that we can do to avoid these support structures? Here you can see what a difference from this image and this image. Simple. In earlier period it was a right angle overhanging. Here I have made the curved. Curves are example of self-supporting structures. So simply by redesigning, I avoid support structures, but I have not hampered the functionality. Again, we can use this for paddling, but simply we have modified design for 3D printing. So what are the other things that we can do? We can redesign it. So all these are examples of self-supporting structures. So just by redesigning things, so whenever someone comes to us, like sometimes we are approached by many Air Force people, what the issue is, they want the conventional design part to be printed. So there are a lot of supports are there. So if we want them to redesign it, we design for minimum support structures. Okay. So all this, by redesigning it, you can save a lot of cost and time also. So again, if I have to print this part, there are a lot of support structures because the angle was less than 45 degree. And what I did is, I simply increased this angle to above 45 degrees. So this support
can avoid it. So this is example, minimum changes in designs, and you can avoid this support structures. Now we come to polymer. So if you talk about from categorization of any 3D printing from the material side, there are polymers, there are metals, there are ceramics, then there are composites also. So wet photopolymerization was the first technique of 3D printed, patented by Charles Hull in 1986. So stereolithographic apparatus, SLA, was the one in which your raw material was liquid resin. So unfortunately the videos are not playing. So what we did the same set of sequencing. We had a CAD model, we converted to STL, we did a slicing, generated support structures. Then we keep on adding the material and we get a part over it. And nowadays there's another technology, DLP, digital light processing. So initially what the SLA had was using lasers, and I think any 3D printing process which uses lasers becomes expensive, because lasers are expensive. So what they did in DLP, we use a digital projection system, LCD screen, which you can say is a cousin of SLA. You can get a part at a fraction of cost, but you compromise on the accuracy of the parts. Only then you should have very fine accuracy. If you don't require anything in 10 or 20 microns, if you're okay with 50, 60 microns, you can use DLP part. So a DLP printer cost starts from like around 20,000 rupees nowadays, the Chinese made. If you want to wear SLA part, then cost goes in 20, 30 lakhs of rupees. So depending upon what your requirement is, selection of accurate or cost-effective technology is also important. So you buy a very fancy printer, but you don't require that much kind of accuracy. So you can use a DLP printer instead of SLA printer. So again, this can be used for surgical models, which are used for pre-surgical planning. And nowadays people are using TUTSI, the clear anilines, for their rectification of the angle of the teeth. So all this can be 3D printed. So again, this was the second technique, loam, pretty obsolete these days, nobody uses it. So this was second technique commercialized for 3D printing. So what they did, they had a laser beam and they had two rollers on which the paper was, adhesive coated paper was there. So one layer as per the CAD model was again. Then this layer beam was used to scan and it was to be thickened. Again one layer will come, stick it, and we get a block of printed part in a square sheet, and we used to cut it using knives. So we have also done this in my older institute. So we get a part and we used to take knife and cut it, and you get an idea. This was, you can see, rough part. So this is only good for prototyping. So we are able to see how this part is going to look like, not for actual use. So FDM, I think so all have used this FDM technology, printers in their schools and colleges. So this is a technology which has made 3D printing a household name. Very much cheap because it doesn't use any kind of lasers. So previous two technologies which were using lasers were very expensive at that time. So here it doesn't use any lasers. Fenda was very simple. So it's a printable statistics. Just like we use toothpaste out of a tube. So it has heaters and a wire was fed and it was coming as a depositing as per the CAD model. And we used to get a 3D printed part. And now this technology, using it, we can print actual implants of polyether peak metal, which is biocompatible grade, used for spinal implants. From prototyping to actual implants that we can use this kind of technology. So again, we know 3D printing, but in earlier days, we had a technology called 3D printing. So it was the name of a technology. Nowadays it is the, you can say, mother of many other technologies, the jet betting. So what we used to do is, in this case, we had a powder bed, we spread powder. Then from this head, adhesives, jacks of adhesive used to come. And where this adhesive used to spread, we get a solid part. Then after multiple iterations, we used to get a 3D printed part, which is good for prototyping. So green part, very fragile. So SLS, again, videos are not working. So it is a powder bed fusion. So here the raw material basically polymer powder, nylon powder, and as per the CAD model, we used to deposit. And this is one of the most versatile technologies used 3D printing.
The basic advantage of this technology is it doesn't use any supports. If you remember, all the other technologies of any kind, whether polymer, metals or ceramics, they all use support. This is the only technology of plastic printing which doesn't use any support. So what it does, it heats the environment to a temperature, so there are no thermal stresses are not generated. So what happens is, oh, this is working. So this is an example of, yeah. So recorder blade is there which deposits the material, sweeping up. So a cake after printing is being taken out. So you can see all the parts are loosely. So what the advantage, because we are not using supports, we can stack the parts over each other. So 37 different parts in a single go we can print. So another technology is polyjet. So until this technology, all the parts that we used to see are either black, white or grey, single colored. The polyjet is something which is being revolutionized of, especially in the case of medical models, in which we got a lot of models, the colors, nerves, eyeballs, etc. So here this is basically like a inkjet printers that we have HP or so what we have is, we have multiple nozzles. Works like an inkjet printer. So just like a multiple nozzle, each throwing a color of different materials we can throw, and a laser heater is there which scans it. You cures the part which is printing every layer. We keep on adding. So we get a beautiful 3D printed colored models. Soft, rigid, clean. So again, if now we come to some metal parts. So again, just like the earlier polymer technology, 3D printing, there are multiple technologies of metal printing are there. So you need to choose a technology very judiciously which is suitable for your purpose. So, and each has its pros and cons. So these are pros and cons. So if you have banded jetting, the parts are, you print at a greater speed. The parts are, you don't require that much kind of knowledge of the printing because the parts are grain strength, adhesive used, so failure is less, but a lot of post processing is required. So sometimes days of it's required post processing. You need to do debinding, then sintering to get a fully printed part. Then powder bed fusion is there. So we will talk in detail about powder bed fusion. So the machines are very expensive. So that is the main go, and you look at a lot of heat treatment, etc. Another technology, electron beam, which is the same powder bed category. The machine is very expensive, but you cannot go below certain feature size, and it requires a lot of investment and a lot of vacuum before creating a machine. And as soon as part is printed, you need to wait for around 7 to 8 hours to cool down. Only then you can take out the print of your part. Then we have deposition based. If you see wire based 3D printing or nozzle based 3D printing, so they are very fast, but they cannot produce very fine features, and surface stiffness is very high. So just give you example of it. So I think I'm more comfortable with this. बस ठीक ठीक. So this is example deposition based technologies. You have a nozzle in which powder, coaxial nozzle in which powder is coming, the same beam from the same nozzle, laser is coming. So they mix in air, deposit.
So you get a part printed, so but the surface roughness is too high, and fine features, if you want to work on MMs, any feature size, this is good, and you're okay with post processing. So if your part is printed, you take it to machine grinding or polishing, so then this is good. But if you require very fine finishing or very fine features and microns, it's not suitable. But advantage is very fast compared to the powder bed fusion. So this is another technology, HP's metal jet fusion. So what happens is the metal powder is spread, then from my multiple nozzles the binder will come, and the same pass a UV cure heater will be there, will cure this. So you get a part at a very fast rate, green part, but processing time is much more greater than that. And the failure rate is pretty much lower in this. 30 million drops per second along every single inch of bed width, enabling So you can see that as if fallen on that, dimensional accuracy. the laser pass is there. To achieve part quality at speed, the area process requires accurate measuring temperatures and repeatability. This is building functional parts that fusion technology would have created several. So this is an example of the timings which we can say with this technology. But again, it has got its pros and cons. If you're using this kind of printer, you can use only the manufacturer's powder only. You can use any own powder. You can make your own powder, or can use third party powder, because the binder which is jetting is compatible with its own powder. So if they are selling at a very exorbitant rate, you are forced to use those powders only. And what happens is when we do the desintering, so a lot of pores will be there because the binder is evaporated. So you need to do a lot of processing there. And again, if you want to use third-party powders, and whenever there is a while doing desintering, there is always shrinkage will be there. So if you are using their printers, their powders, then they software already compensate for that shrinkage. So the parameters are optimized for those. So you need to keep that thing also in mind. Then someone who wants to use a low cost but good quality, this is. First, let's start with a graph underneath your part. Example of FDM based metal printer. So if there are many person who can use, you have FDM machine and their metal filaments are available, so can use those if your nozzle temperature above 300 degrees centigrade, any FDM printer, you can use metal filaments and use those for printing. So this is example of like a two metal filament, and then ceramic filament is used as support. Safely suspended within a two-part plastic binder. It gets heated and extruded onto the build plate where the release material gets a safer and more cost-efficient workflow. Steels, coppers, ink and finished printing, you'll get a notification. So once your part is finished, Go to the printer, move the part to the build tray. so you can easily remove it in this technology. However, a large part of it is comprised of copper. But it's still not usable form. You need to do debinding, sintering, and then. The wash one remove molding. Wash times will vary, ranging from a few hours to a few days, depending on the thickest region of your part. After that, it's now called a brown part and is ready for sintering. Let's go over to the furnaces. This is sinter 2. A furnace transforms a print from the temperature ramps slowly to burn. Then away doing debinding and the sintering phase. of remaining binding material. Use a carbon-free retort to monitor remotely using. Once removed from the raft, these parts and your printed part remains powderized. This allows the structure to be tacked to the raft to better control shrink and accuracy throughout the process, but also an easy release after sintering. At this stage, your part. So pretty much easy. You're removing support very easily. But again, you can use only their only filaments, because the compensation, the debinding phase, etc. has been optimized for their own materials, and this is pretty much slow. So not suitable mass production. So you can see like FDM printers, so one part at a time, then it moves to the next part. So, but the cost of print is very less when we talk about the metal printers. So now we come to the powder bed fusion that we use in CSIO. So this is a typical example how it works. So we have this dispenser bin in which we keep the raw material, titanium, stainless steel powder. There's a building platform, the collector bin. This is called recoater blade. So
blade goes its home position, takes amount of powder, spreads on the building platform, then the scanning occurs. Scanning, extra powder goes in the collector bay, then laser beam will come and scan. And then this step will go on repeating until you get your final height. So this is how a metal printer working looks like. The laser beam scanning as per the CAD model which was sliced. Then after one layer is completed, fresh layer of powder will come. Then again this process will come. So yeah, this is something which you need to learn when you are printing with metals. So whatever your part quality or the mechanical part depends upon the energy density it is getting. So your energy density depends on the power that which we are using, the velocity, what the hash distance, the distance between two green lines, and the layer thickness. So if you have a part, you are printing at 30 micron layer thickness, and tomorrow same material, same laser power, if you increase the layer thickness from 30 to 60 micron, this whole energy density will change. Use the same energy density, your part will not have the mechanical properties. So any change in powder or layer thickness, you re-optimize your powder. So there is no rule of thumb that this is the default parameters. I am using X party metal powders, and I'm starting to, okay, this is expensive. Let's have a cheaper one. But I know again re-optimize this parts, this energy density equation. Only then I will be able to get the parts with the good mechanical properties. So that means I have to do all the mechanical testing, tensile testing as per standards. Only then I can. Then what is the beam offset? So since we are using lasers, so every laser beam has got its own dia. So suppose my laser beam dia is 80 micron, but when it strikes on the metal powder, it melts extra area nearby in a circular diameter. The rule of thumb is if you have X amount of laser beam dia, 2x is the minimum feature size you can get. So 80 micron, 160 micron is something minimum feature size you can get theoretically. So we add 10-20 microns, so which is the minimum feature size you can get from your machine. So what happens is whenever you're printing any new material, you need to compensate the beam. So anyone working on a milling machine will know about the tool offset that we do. So tool is something which is required for the machine accuracy. If you don't do tool beam offset, either a part will be lower in dimension or higher in dimension. So part orientation. So if you remember the staircase effect, it can be avoided or reduced using the part orientation. Part orientation is the one of the critical thing which can make or break your economics. So with part orientation, your buildability is hampered, the cost and the quality of the part is also hampered. So this we will see in coming slides. So part positioning. So when we are printing in a 3D printer, we don't place the parts one behind each other. So there is always sequence of this. So if anything happens to this part, suppose we are into R&D, like we are in R&D, we do a lot of parameter optimization. So we are printing a newer material and we want to check did some parameter optimization on this part. If this fails, it will get up, support will delay and it will destroy all these parts. So we always place it at angles so that any part failure is there, so we can have minimum loss. Because what happens in metal printing, the failure is very expensive. Suppose you are printing titanium and after 4 hours of machinery the part has failed. So what are the losses? The metal powder is a loss, and when you are printing titanium or steel or any, it is printed in an atmosphere. So titanium we typically print in argon atmosphere, so one cylinder costs around 3,500. So for running the machine, at least for 18-hour job, 3 cylinders are required. So typical around 9-10,000 failed job, you are lost only for gases. Then metal powder loss is also there. The lot of failures are very expensive in powder bed fusion. So there another thing is, if you remember that recorder blade, so whenever you are placing the parts, it should come into minimum area of contact.
So suppose this is my recorder blade and this is the part I want to print. So if I am printing, keeping it like this, my area of contact is very higher. But if it tilt it like this one, my area of contact gradually increasing. So I can counteract the recorder forces. So if you look at this one, very low contact area is there, it is good. But if you look at this one, so my contact area is increasing. So it will hamper my chance of printability. But by simply orienting the part, you can increase the chance of printability. So again, this is example of good orientation, bad orientation. So here, my area of contact is high. If somehow this part is damaged, so if my both parts are delaminated, they will have chance of delamination more. But if this is delaminated, but still my part I can print this part. So at least my printing cost will somehow justifiable. So this is example of recorder blade. If you see this image, so only this part is shiny. So what is the reason? Because the supports are delaminated. It is rather above, it's from where the baseline. So what will happen? My recorder blade will come and all the parts in this line will have either the part will fail or will have some come out of porosities, and we have to discard this part of the part is printed. So just an exercise. So we have to print this part. There are two orientations. What are the pros and cons of each orientation? So this orientation, and this orientation. So this orientation can someone give one advantage and one disadvantage. Okay. So this is all the support structures. So after printing this part, I have to do a lot of post-processing. So I have to take a lot of chisel hammer and stack this part out, lot of effort. But there's an advantage. The building time is less. So in this, suppose I'm taking 2 hours. But if I go to this orientation, my building time is suppose 10 hours. But the advantage is I'm having very large support structures. So I have to spend much less amount of effort in removing it. So if I will do another exercise. So a single tri-square. So what are in the first, how many parts we can print? 2. So what is the effect on build time among the 3 geometries? Is a plus. I am having low build time. Good. Nesting means I can print maximum number of parts. So nesting is good or bad in this among the 3 orientations? Any guesses? Second. 2. Nesting is bad. 2 ही पार्ट बन रहे, मेरा बहुत महंगा पड़ेगा. 2 बनाऊंगा तो मेरा खर्चा ही मेरा चलाने का 40,000 रुपये मशीन को ऑपरेट करने कहाँ निकलेगा? Then amount of support. Is also bad. पूरे पार्ट पे ही सपोर्ट लग रहा है तो अगेन वेस्ट ज़्यादा है, मेहनत भी ज़्यादा है. तो अब मेहनत कैसे कम करनी है? अब मैंने इसमें किया, माई बिल्ड टाइम इंक्रीज टू द मैक्सिमम 1. नेस्टिंग, हाउ मेनी पार्ट आई कैन प्रिंट? कैन समवन काउंट? 6. तो पहले 2 थे, अब 6 हो गए. कॉस्ट मेरी पर पार्ट इसमें कम आएगी, तो इट्स गुड फॉर मी बिकॉज आई एम बिजनेस मैन. मुझे तो पार्ट में पैसा कम कमाना है, मेरी पर पार्ट कॉस्ट कम आएगी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अमाउंट ऑफ सपोर्ट मेरा बहुत बढ़ गया है. ठीक है, अब मैं क्या थर्ड ओरिएंटेशन में मैंने क्या किया, इसको 45 डिग्री पे अलाइन कर दिया.
नतीजा क्या हुआ, बिल्ड टाइम इसके मुकाबले अभी भी हाइट में ज़्यादा है ना, तो बिल्ड टाइम इज स्टिल नेगेटिव। सुटेबल टू नेस्टिंग, कितने नंबर पार्ट्स हैं, सिंगल, सबसे कम इसमें ही है, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा बनाने में। बट अमाउंट ऑफ सपोर्ट कि मैं एंगल पर अलाइन किया था तो आई हैड अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ सपोर्ट, तो बस मुझे मेहनत से बचना है वो काम चोर हूँ यार, मुझे काम नहीं करना, मिनिमम करे तो मैं ये कर लूँगा यार, कॉस्ट ऑफ देखी जाएगी ना, तो मैं ये सपोर्ट कर लूँगा बिकॉज मेरा अमाउंट ऑफ सपोर्ट इज़ वेरी लेस, बहुत कम हथौड़ी चलानी है मुझे रिमूव करने के लिए। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये नो सॉफ्टवेयर विल टेल यू, दिस इज योर ओन एक्सपीरियंस, दिस इज योर ओन जजमेंट। एक पार्ट को सिंपली ओरिएंटेट किया आपने, इफ़ योर मोटो वॉज मिनिमम बिल्ड टाइम यू गेट गॉन फॉर दिस, बट इफ़ यू वांट टू डू मास प्रोडक्शन मेरी पर पीस कॉस्ट कम आनी चाहिए, सिंपली ओरिएंटेशन चेंज किया आपने, यू सेड अगर आपको मेहनत कम करनी है तो आप ये, तो यू आर द बेस्ट जज फॉर कौन सी ओरिएंटेशन सेलेक्ट करनी है। अगेन ये पार्ट है, ये जो अंदर इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स है, इसमें बात करें रिमूवेटिव सपोर्ट खराब है, बहुत सपोर्ट लग रहा है। रफनेस, जहाँ जहाँ पे सपोर्ट लगता है, सो देयर लॉट ऑफ मार्क्स आर देयर विच हैव टू ग्राइंड पॉलिशेस, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ सपोर्ट रफनेस फ्रॉम दोज पार्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी आई रिक्वायर टू डू लॉट ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। अनदर थिंग इज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि कर्व है ना, अंदर सपोर्ट लग जाएगा, तो रिमूव अंदर इंटरनल सपोर्ट रिमूव करना इज ऑलवेज डिफिकल्ट। तो मैंने क्या किया, ओरिएंटेशन चेंज किया इसका, तो इंटरनल सपोर्ट जो थे खत्म हो गया ओरिएंटेशन करने से, रफनेस कंपेयर टू दैट वन, ठीक है। अवॉइड नहीं कर सकते बट वी कैन रिड्यूस, ठीक है। अब मैंने एक ओरिएंटेशन किया, इसमें अंदर सपोर्ट लग रहे हैं, डिफिकल्ट टू रिमूव, ठीक है। तो फॉर दिस ओरिएंटेशन दिस वाज माय बस इंटरनल, कुछ और नहीं, इंटरनल सपोर्ट लग रहा, अंदर टूल चलाना इज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली व्हेन द एरिया इज कर्व्ड। स्ट्रेट हो तो ठीक है, आप रिमूव चला दोगे, बोरिंग टूल चला दोगे, इसमें पॉसिबल नहीं है। सो अगेन नाउ वी कम टू एप्लीकेशन। सो 3D प्रिंटिंग अब ऐसा शायद ही कोई फील्ड हो इन विच इट डजंट फाइंड एनी एप्लीकेशन, वेदर यू गो टू टॉक अबाउट ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस, मेडिकल, सिविल आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स आर बीइंग प्रिंटेड विद 3D प्रिंटिंग। तो let's go to some polymer. So aerospace is the biggest adopter of any technology. So here you can see drones, अगर कॉलेज में बच्चे खुद ही बना लेते हैं parts. So these are parts and this is a single 3D printed of around 13 feet manless. So bigger drones can also be printed and these are for actual use. So then connectors, this is a whole car 3D printed. So this kind of thing can be done. So अभी तो क्या होता है, जैसे हमारी कार में छोटा मोटा कोई पार्ट खराब हुआ प्लास्टिक का, उसको हम खुद ही बना लेते हैं। Whenever हमारे तो बच्चे बैठे हैं यहाँ, मेरे स्कूल का स्टूडेंट है, so in our lab people join sometimes, so we always encourage people to do first what you want to print, whether you want to print any keychains, so the curiosity generated. The technology advantage is that filament is very cheap. 700 to 1000 रुपये पर केजी मिल जाता है, बट द अमाउंट ऑफ लर्निंग दे गेट इज ह्यूज। सो अगेन दिस इज फॉर इंडस्ट्रियल ग्रिपर्स, आपको ग्रिपर बनाना पहले मोल्ड बनाना पड़ता था या मशीन करना पड़ता, अब यू कैन प्रिंट इट। सो अगेन न्यू बैलेंस का एक फुल एडास का फुल रेंज है विच इज यूजिंग 3D प्रिंटिंग फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल, फ्रॉम द वेस्ट कलेक्ट फ्रॉम ओशंस। सो वेस्ट को आप वेस्ट टू वेल्थ वाले काम भी कर सकते हैं। सो यू कलेक्ट वेस्ट, यू मेक योर फिलामेंट्स, यू प्रिंट योर ओन थिंग्स। देन ड्रेसेस, इफ यू रिमेंबर SLS में इट डजंट रिक्वायर एनी सपोर्ट, सो यू कैन प्रिंट प्लास्टिक्स फॉर ड्रेसेस एंड फॉर फ्लेक्सिबल पार्ट्स, ठीक है। स्टॉलर्स, किसी का जुड़वा बच्चे हो तो घुमाना मुश्किल होता है ना, यू टेक 2 joint with connector pin, then shoes, glasses. So nowadays some companies are there in India which what they do, you go to any lens card, so set frames are there. So what they do is they will scan your face, they customize the frame angles according to your face. So this kind of customization is also possible. Then architecture models. So this I will skip because of lesser time. So implants, बताया था PK, with biocompatible and strong materials there, it's possible to print.
ना सर्जिकल मॉडल्स में, स्पेशली इन द केस ऑफ कंजाइंटल ट्विल्स वगैरह में काफ़ी यूज़ में आता है जब दे आर जॉइंड बाय बॉडी पार्ट्स। तो व्हाट दे डू, डॉक्टर हैज़ टू प्लान हिज सर्जरी। ऐसा नहीं होता कि सीधा पेशेंट आया है एंड ही स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्जरी। तो कॉम्प्लेक्स केसेस में दे वांट द मॉडल, सो फ्रॉम दे कैन प्लान, फ्रॉम दे नीड टू कट द बोन द टिश्यूज एक्सेट्रा सो द चांस सर्वाइवल्स। उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, तो इफ द डॉक्टर हैज एनी फिजिकल मॉडल इन हैंड सो ही कैन प्लान very judicially, or it happens helps in reducing surgical time also. So किसी सर्जरी, सपोज इट्स अ 10 hour सर्जरी, अगर इसको यूज़ करके डॉक्टर ने प्लान किया 2 hours भी कम होंगे, तो 2 hours ऑफ फटीग इज लेस गेटिंग, तो चांस ऑफ एक्यूरेसी इन सर्जरी इज ऑल्सो एनहेंस्ड। जो दैन सर्जिकल गया डेंटल इम्प्लांट्स वगैरह के लिए, तो दिस इज आवर ओन केस दैट वी डिड फॉर JMC चंडीगढ़। तो दिस इज स्क्लेरोसिस, जो क्या देखा हो बूढ़े लोग का स्पाइन टेढ़ा हो जाता है, तो डॉक्टर वांटेड टू सर्जरी, लेकिन इसमें क्या था, आपको एक्यूरेट अमाउंट ऑफ पेडिकल स्क्रू, जो स्क्रूज आते हैं पीछे, वो चाहिए होता है। तो हमने इसका मॉडल, हमारा सॉफ्टवेयर था, कैड मॉडल बनाया, देन वी डिज़ाइन दिस जिग्स फॉर द वर्टिब्रल। तो यहाँ पे पीछे होल्स है, तो डॉक्टर वहाँ पे पिन पॉइंट करके डायरेक्टली होल ड्रिल कर सकता है। तो इट सर्जरी जल्दी एक्यूरेटली हो जाता है, उसको मैनुअली फाइंड आउट नहीं करना कहाँ ड्रिल करना है। तो दिस वॉज फॉर नी इम्प्लांट, कि नी यहाँ से देखो टूटा हुआ है, तो टिपिकली वो सोल्यूशन हुआ कि नी रिप्लेसमेंट करना है। बट व्हाट वी डिड विद डॉक्टर्स इज, हमने जिग बनाया, डॉक्टर ने कट करके इसको रीअलाइन कर दिया, फिर स्क्रू से फिक्स कर दिया, तो उसका रिप्लेसमेंट बच गया। तो बट बिकॉज द बोन वाज वेरी लेस और टूटा हुआ है, तो एक्यूरेट कटिंग वॉज रिक्वायर्ड। सो दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैन बी यूज फॉर 3D प्रिंटिंग। देन फिर जब भी हम नी कट करते हैं, नी रिप्लेसमेंट करते हैं, थोड़ा अमाउंट ऑफ बोन रिमूव करना पड़ता है। तो अगर ये नहीं कस्टमाइज जिग नहीं होगा तो कट ज़्यादा लगता है। एवरी इंच ऑफ बोन इज़ प्रीशियस, जो कितना कम कट लगेगा वो आपको रिविजन सर्जरीज में हेल्प करेगा। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल हाउ वी कैन प्रिंट असेंबलीज इन 3D प्रिंटिंग। सो प्रोस्थेटिक्स, so this whole part is being 3D printed in one go. कोई मैकेनिकल असेंबली नहीं, just you need to design your part as per the process you are taking. So you can see it is very lightweight, the person can run, walk. And cycle. So if you choosing your process and design for additive manufacturing, some kind of assemblies also you can avoid. So nowadays there are companies which are 3D print tablets, जब पैरासिटामोल वगैरह खाते हैं ना, they can also be 3D printed. So 3D printed medicines is also being used nowadays. So this is how the conventional process was there. तो इतने steps करने पड़ते थे। Printer है आपके पास, and you optimize the parameters, mixing, printing, and you're done. So you are reducing the number of steps, the number of machinery is required. And then for ceramics and bioprinting, now we come to metal. सो बिकॉज आपने देखा प्रिंटिंग का मेटल का पाउडर बेड फिशन था, तो बिकॉज टूललेस प्रोसेस में कोई कटिंग मिलट कटर यूज़ में नहीं हो रहा, तो यू कैन रीडिज़ाइन द पार्ट्स। अब जैसे एक प्लेन होता है, उसमें इस बकल लगता है बेल्ट में, अब आपको कोई वेट रिड्यूस करने को बोला जाए, तो ऐसे मैकेनिकल जो स्टील का बनता है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, स्टील का यार, एल्यूमिनियम का तो लाइट वेट है ना, वेट कम हो जाएगा। तो कितना कम हुआ, 155 से 120, सेविंग कितना, 35 ग्राम्स। बट इफ रीडिज़ाइन इट एज पर द एम, क्या किया हमने, फोर्स कर दिया, फंक्शनैलिटी हैम्पर नहीं करी, क्लैम्प वही का वही है, बट द वेट वॉज रिड्यूस टू 68 ग्राम्स। और एक प्लेन के अंदर कितने होते हैं, तो अमाउंट एंड कीप मल्टीप्लाई विद द लाइफ साइकिल ऑफ प्लेन, तो कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल सेविंग आप कर सकते हो। सिमिलरली जैसे इंजन ब्लॉक कन्वेंशनली आप क्या ड्रिल करते हो, अगर ड्रिल है, मिलिंग कटर है, उसे मशीन फिक्स किया, बट यहाँ पे आप उसको ऐड कर रहे हो, इनिशियली डिडंट हैव एनीथिंग, तो आपको यहाँ पे ये मेटल, एक्स्ट्रा मेटल नहीं चाहिए, इसको टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन। आप सिंपली जहाँ पे आप चाहिए वो ट्यूबिंग डिज़ाइन करोगे, कनेक्शन डिज़ाइन करोगे, यू गेट अ पार्ट ऑफ 30 kg to 5.5। सो अगेन आप तो जैसे BS6 आ रहा है, BS7 आएगा, तो अमाउंट ऑफ वेट यू कैरी इस माइलेज ज़्यादा आएगा ना, कम होएगा, तो EVs में आ रहा धीरे धीरे। तो विद 3D प्रिंटिंग यू कैन बिकॉज इनिशियली यू डिज़ाइनिंग फॉर एडिटिंग, आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो कि ब्लॉक लिया उसमें से मशीन क्या, अब ऐड करो, जहाँ मुझे नहीं चाहिए मटेरियल ऐड नहीं करूँगा मटेरियल में,
So this is example of LEAP engine. This was launched in 2015. So this is a fuel nozzle. हैं इसको बनाने के लिए there are multiple steps और ऐसा लगता था. So तो इसको रिडिज़ाइन किया गया. अब आपको ये पार्ट बनाना फॉर कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग. व्हाट यू विल डू ड्रिलिंग, यू विल डू मशीनिंग, देन यू विल डू वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक जॉइनिंग करोगे. तो मल्टीपल स्टेप्स चाहिए थे. आपने क्या रिडिज़ाइन किया तो अमाउंट ऑफ मेटल हैज़ रिड्यूस्ड. ऑल दिस हैड मेटलर्जिकली बॉन्डेड. 20 पीसेस टू 1 लेस वेट. तो आप इफेक्ट देखो कितना लंबा चलता है लाइफ साइकिल. अगेन वो आर मैकेनिकल दे विल नो कि मुझे कोई डाई इंसर्ट बनाना है तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ डाई इंसर्ट इज मैं कैड मॉडल ब्लॉक लूँगा, लेथ पे मिलिंग पे जाऊँगा, ड्रिलिंग पे जाऊँगा, फिर कहीं जाके एक वायर कट जाने के बाद मेरा कोई 2-3 महीने में मेरा डाई इंसर्ट कॉम्प्लेक्स डाई इंसर्ट बनता है. सो बट इफ़ आई 3D प्रिंट बिकॉज टूललेस, जो होल करना है मैं होल डिज़ाइन कर दूंगा. जहाँ मिलिंग का फीचर है मिलिंग का फीचर. तो व्हाट आई कैड मॉडल आई हैव डिजाइन माई सपोर्ट स्ट्रक्चर, डेटा डिज़ाइन किया, आई हैड अ प्रिंटर, देन आई गेट डाई इंसर्ट. सो द टाइम विच वॉज, अभी होता है क्या है कन्वेंशनल असेंबलीज में आप एक मशीन में जाते हो दूसरे पे जाते हो हैं, सेटअप टाइम भी लगता है, टूल एक्स्ट्रा चाहिए. तो टूललेस है ना, कोई सेटअप नहीं है, कोई नहीं, एक ही मशीन में लिया, डाई इंसर्ट लिया, फिर फिनिशिंग कर लिया. तो द मंथ्स टाइम, द जॉब विच वर डूइंग मंथ्स कैन डन इन वीक्स. सो टिपिकली कई बार होता है मैकेनिकल के फील्ड में, मतलब 3-4 हफ्ते लगता है, कॉमन बात है एक डाई इंसर्ट बनने में. बट द सेम जॉब कैन डन इन वीक ऑफ टाइम. सो अगेन ये इमेज जानी पहचानी लग रही है किसी को? देखा कभी ऐसा? देखा ही होगा, किसी न्यूज़पेपर में आया होगा कि चोर आए, चारों फैंसी से कार लेके आया था, महंगे अलॉय व्हील डलवाए, अगले अलॉय व्हील से गायब. सोल्यूशन क्या है? लोग क्या करते हैं, अमेजन पे मिलते हैं, एक नट अलग मिलता है, वो ले आते हैं. चोर भी तैयार स्मार्ट हो गए ना, उसके भी टूल ले आते हैं. तो देयर इज अ कंपनी इन इटली, व्हाट दे डिड इज दे टेक योर वॉइस सैंपल्स, कन्वर्ट इट टू STL फाइल, उसका टूलिंग बना लिया उन्होंने ना. तो इसका टूल जो होगा चोर के पास नहीं होगा, बिकॉज इट्स कस्टमाइज टू योर वॉइस. तो आएगा, खुलेगा नहीं, तो योर एक्सपेंसिव अलॉय व्हील्स आर सेव्ड. तो सपोज अब गुम हो गया है, तब क्या करोगे? सपोज टूल गुम हो गया, नट गुम हो गया एक, तो देन यू अगेन गो टू कंपनी, यू गिव योर वॉइस कोड जो आपने दिया होगा उस वक्त, ये कोडिंग है, दे विल रीप्रिंट इट. तो दिस हाउ दिस डे टू डे प्रॉब्लम्स कैन बी यूज्ड, 3D प्रिंटिंग कैन सॉल्व योर डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑल्सो. So again we come to some, we talk about inventory management. अभी क्या होता है, कोई भी कार का पार्ट है, एयरप्लेन का, हमें लॉट ऑफ उसकी स्पेस रखने पड़ते हैं ना. तो अगर हम उन स्पेस को, बिकॉज 3D प्रिंटिंग में हम पार्ट बना सकते खुद ही, अगर हम 5% की भी इन्वेंट्री कम कर पाए यूजिंग 3D प्रिंटिंग, तो वी कैन रिलीव द असेट्स 500 बिलियन. और कोई भी पैसा स्पेयर में आपका पैसा अटका हुआ है, जब तक बिकता नहीं पार्ट तब आपका पैसा वहाँ पर अटका हुआ है. तो 500 बिलियन लॉट ऑफ मनी, द मनी विच कैन यूज फॉर योर प्रोडक्शन और किसी और एक्टिविटी यूज किया जा सकता है. सो हाउ 3D प्रिंटिंग इज हेल्पिंग. अच्छा, एक तो ये चीज़ है, सारे पार्ट आर नॉट 3D प्रिंटेबल. जो भी आपके सपोज कार में लगते होंगे, अराउंड 5 to 10% पार्ट्स कैन बी 3D प्रिंटेबल. ठीक है. तो आपने कानबान सिस्टम सुना होगा, जस्ट इन टाइम सुना होगा, तो उस पर भी जाते हैं. तो टिपिकली क्या होता है, सप्लायर को ऑर्डर आता है, OEM बनाता है और कस्टमर को मिलता है 10 से 100 दिन में. वो लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज रिक्वायर्ड. अदरवाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, सप्लायर, OEM, देन वेयर हाउस से बहुत सारा लंबा टाइम आपका पैसा फंसा रहता है. बट इफ़ यू हैव 3D प्रिंटिंग, एक तो आपने डिजिटल फाइल्स है उनकी, आपको ऑन डिमांड आया, आपने बनाया, बिकॉज यू गॉट टूललेस प्रोसेस, टाइम इज रिड्यूस्ड. पैसा, टाइम इज मनी ना, तो आई एम सेविंग माई टाइम विच इज इक्वल टू मनी. अगर आपका ऑन डिमांड भी था या स्टॉकिस्ट वाला भी था, OEM से, कि बिकॉज यू आर द कस्टमर, यू हैव डिजिटल फाइल्स, आपने वेयरहाउस खत्म कर दिया. वन स्टेप यू आर कॉस्ट इफेक्टिव, यू आर गेटिंग पास फास्टर. दिस इज हाउ, मतलब इट्स इक्विलिब्रियम ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट यूजिंग 3D प्रिंटिंग. जैसे ये पार्ट था, दिस सीट था उसका, मेट्रो का, जर्मन का. तो दिस वॉज द कन्वेंशनल पार्ट. बनाने में कितना टाइम लगता है? अगर मोल्ड नया बनाया, you want to manufacture new mold, then it takes 11 weeks. If you have existing mold, then it takes around 4 weeks. Costs it 2,900 euros. But you did some part with some modifications. You modified for 3D printing. Lead time is 1 week because you don't require any mold. The cost is 1,200 euros. A lot of saving can be done.
So these are some of the companies which we are using 3D printing in day-to-day production. Audi, CAT, fuel filter base. So प्रोडक्शन मतलब यूज़ में आ रहा है आपके एरोस्पेस में उसमें. Now we come to something that we do in CSIO. So in CSIO, these are the infrastructure that we have. We have metal printer in which mostly we print titanium. We have a FDM printer. We have two FDM printers. One is which we print PEEK. Then we have DLP printers. So एक और होता है कि because printer खरीदने से काम नहीं चलता है, आपको lot of other accessories are required. आपने प्रिंट किया, अब प्रिंटिंग में क्या होता है मेटल प्रिंटिंग में, सो व्हेन वन लेयर इज स्प्रेडिंग, लेजर बीम पड़ता है, दैट इज हीटिंग फेज. तो नीचे की लेयर जो होती है वो कूल हो रही होती है. अब एक लेयर आपकी हीटिंग फेज में है, एक कूलिंग फेज में है. उसको तो रोक के किसने रखा हुआ है? सपोर्ट्स ने. जब मेरा पार्ट प्रिंट होता है, मैं पूरा बेस प्लेट निकालता हूँ उसको, देन वी पुट इन फर्नेस, डिपेंड ऑन व्हाट मटेरियल इट इज. फॉर टाइटेनियम वी हीट इट इन आर्गन एटमॉस्फेयर अराउंड 18 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 8 आवर्स. उसके बाद निकालता हूँ, उससे क्या स्ट्रेस लीव हो गए मेरे, तो फिट रिमूव. अगर मैं उसको वैसे निकालता हूँ पार्ट विल कर्ल अप. तो हीट ट्रीटमेंट भी चाहिए, पार्ट प्रिंट हुआ उसके बाद मुझे वायर कट भी करना है, फिनिशिंग भी करना है, फिर बेस पर यूज भी करना है, फिर मैकेनिकल टेस्टिंग भी करना है, मेजरमेंट भी करना है. तो लॉट ऑफ अदर सेटअप्स आर रिक्वायर्ड. हमने प्रिंटर खरीदा, हीट ट्रीटमेंट फर्नेस नहीं खरीदी, कोई यूज़ नहीं है, कोई पार्ट यूज़ नहीं कर पाओगे. हैं आपने सपोर्ट लगाया, चिजल हैमर से तोड़ लिया, ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है पूरा सॉलिड पार्ट होता है, तो यू नीड वायर कट और कटर. वो नहीं तो पार्ट बेस प्लेट बन गया है, चिपका हुआ है, अब यूज़ नहीं करते, रिमूव ही नहीं कर पाओगे. तो लॉट ऑफ अदर एक्सेसरीज आर रिक्वायर्ड. सो नाउ वी व्हाट वी कम. सो द बेसिक ऑफ दिस slide is, so these are all 3D printed implants. So and the companies which are manufacturing it. So if you see, there are a lot of implants for every body part. There are 3D printed, but there is no Indian company in this. And this we want to change. So we want an Indian company to be in global roadmap for orthopedic implants. So if we categorize the implants, we can categorize two types. One is आपके किसी रिश्तेदार को या एक्सीडेंट हुआ या आर्थराइटिस और नी रिप्लेस करना है, तो डॉक्टर की दिस कंपनी का इस साइज़ का चाहिए, इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल. सेकेंड वन इज़ ऐसा एक्सीडेंट हो गया है और कैंसर हो गया, नथिंग इज अवेलेबल, तो क्या करना है? देन वी डिज़ाइन इम्प्लांट फॉर कस्टमाइज पेशेंट. मतलब एक पेशेंट के लिए इम्प्लांट बनता है जिसको कस्टमाइज. तो स्टैंडर्ड इम्प्लांट्स विच आर रेडीमेडली अवेलेबल, कस्टमाइज इम्प्लांट विच आर मेड फॉर वन पर्टिकुलर पेशेंट. सो अब बात करें स्टैंडर्ड इम्प्लांट्स की. दिस इज स्टैंडर्ड इम्प्लांट, यू कैन से दिस ऑल सॉलिड. बट हैव यू एवर थॉट कि हमारे इम्प्लांट जो है टाइटेनियम से बन रहे हैं, कोबाल्ट क्रोम से बन रहे हैं, बट दे आर ऑल सॉलिड. बट नेचर के जो नेचुरल जो मटेरियल्स हैं दे आर ऑल पोरस. पोरस होता है ना, हनी कॉम, हनी बी का स्ट्रक्चर हनी कॉम है, बैम्बू, ट्री, माइक्रोपोर्स होते हैं. एंड बोन इज ऑल्सो पोरस, बट आर इम्प्लांट्स आर सॉलिड. ठीक है, क्यों मिलता है कास्टेड फॉर्म में मिलना है तो सॉलिड ही मिलना है. उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या आते हैं? तो दिस विच सिमुलेटेड इन आवर लैब. हमने क्या किया, हमने एक सॉफ्टवेयर था हमारे पास, उसमें पूरे मसल अटैचमेंट लगाए, एक हेल्दी बोन को हिप रिप्लेसमेंट कर दिया, उसका इम्प्लांट डाल दिया. ठीक है, फिर उसका एफए एनालिसिस किया, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस किया और रिजल्ट आए, दिस वॉज अ हेल्दी बोन. तो ये वैल्यूज भूल जाते हैं अभी, है ना. तो वी सी कलर्स, तो यहाँ पे बिट बहुत कलर अच्छा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. लेकिन जब मैंने हिप रिप्लेस कर दिया उसका, तो क्या हो गया, मेरा कलर एक ही कलर का है मोस्टली. तो मेरे ये दिस सिमुलेट्स लोड एक्ट कर रहा है उस पर. तो इसमें मेरा लोड है नहीं, तो मेरा लोड कहाँ गया? मेरा लोड आ गया इम्प्लांट पे. क्यों? बिकॉज माई इम्प्लांट वॉज मेड फ्रॉम टाइटेनियम विच इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन मेरा ह्यूमन बोन. ठीक है, अब बोन में क्या कैपेबिलिटी होती है? आप छोटे थे तभी बोन वही थी, अब आपका ग्रोथ रुक गया है. बट यूर सपोज यूर 40 kg, कल को 60 kg के हो गए, बोन तो वही है ना. लेकिन चेंज 80 के थे 40 के आ गए तो बोन वही है. तो बोन अडेप्ट्स होता है लोड्स एक्टिंग ऑन इट. ठीक है, तो मोटा वेट बढ़ गया मेरा तो बोन भी थिक हो जाएगी, अगर मेरा वेट कम हो गया तो बोन भी हो जाएगी. अब हुआ क्या, अब मेरे बोन पे लोड नहीं पड़ा. लोड कहाँ लगेगा? इम्प्लांट पे, जो टाइटेनियम का बना था. टाइटेनियम का इलास्टिक मॉडुलस कितना है? 110 GPa. मैं ह्यूमन बोन का जो आउटर शेल है इट इज 20 GPa, इनर का स्पॉन्जी बोन 4 GPa. तो इट्स 5 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन मैं ह्यूमन बोन. तो लोड्स पे आए नहीं. अब हुआ क्या, 15-20 साल में बोन लूज हुई, लोड नहीं पड़ रहा तो रैप्ट कर, लोड नहीं पड़ रहा तो लूज होके इम्प्लांट फेल हो गया, एक्ट फॉर रिप्लेसमेंट. तो जो कोई बोलते हैं ना, रेडियो में ऐड सुनते हैं कि 40 साल गोड्डे चलेंगे जी,
आइडियल कंडीशन में आप कार लेने जाते हो, इट विल गिव यू 40 किलोमीटर पर आवर या 30 की माइलेज देगी, है ना। बोल कहता है आपको ब्रेक नहीं लगना चाहिए, स्पीड पे चलाना है, कोई सामने ना चाहिए। समझ द केस विद आर बॉडी इम्प्लांट्स, हमने मशीन में सिमुलेशन किया है, उसमें क्या एक पर्टिकुलर वॉकिंग पैटर्न है, पर्टिकुलर वेट पे किया है ना, हमारा तो वेट चेंज हो रहा है, तो टिपिकल लाइफ साइकिल है 15 ईयर्स। 15 ईयर्स से ज़्यादा कोई भी इम्प्लांट चल रहा है ना, इट्स बोनस फॉर यू। ऐसा नहीं, चल सकते हैं 20-25 साल भी चलते हैं, बट आपका आइडियल कंडीशन सेल्डमली वी गेट। सो अब उससे हुआ क्या, फेल हो गया, बोन यहाँ पे, बोन पे लोड नहीं पड़ा, दिस कॉल्ड स्ट्रेस शील्डिंग, तो बोन डिग्रेड होनी शुरू होगी और आपके लॉन्गर रन में इम्प्लांट अपनी जगह से खिसक गया, फेल हो गया, अब आपको नया इम्प्लांट लगाना है। और रिविजन सर्जरी ऑलवेज एक्सपेंसिव, और पहला जो इम्प्लांट निकालते हैं ना, ऑलवेज टेक्स अ बोन विद इटसेल्फ, ठीक है, तो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। सो व्हेन वी टेक प्राइमरी इम्प्लांट, हमारा पहला सर्जरी हुआ, नी का था, हिप का था, तो हम निकालते हैं तो इट ऑलवेज टेक्स बोन विद इटसेल्फ। पहले हम फिक्स किया हुआ था ना, बाहर निकल कुछ बोन का टुकड़ा भी साथ में आ जाएगा, तो हमारा बोन स्टॉक जो है एवरी रिवीजन सर्जरी में बोन स्टॉक कम होता जाएगा, तो इम्प्लांट उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है। अब 3D प्रिंटिंग कैसे हेल्प करता है? सो विथ 3D प्रिंटिंग वी कैन हैव दिस पोरस स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि कन्वेंशनली पॉसिबल नहीं थे। अभी हमने खुद के लैब का डेटा है हमारे उसका, तो हमने क्या किया, हमने इम्प्लांट में पोरस स्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेट करने शुरू कर दिए। फ़ायदा क्या हुआ? इलास्टिक मॉडल्स की बात करें तो इलास्टिक मॉडल टाइटेनियम 10 GPa था, वी कैन रिड्यूस इट टू अराउंड 3 GPa, ठीक है। अभी इम्प्लांट फिक्स करने के लिए वी टेक बोन सीमेंट, जैसे ईंटों के पीछे सीमेंट डालते हैं ना, जैसे बोन का भी सीमेंट होता है, जैसे कौन सीमेंट है, कप लगाया, सीमेंट फिक्स किया, बॉडी में लगा दिया, तो ठीक है। अब इसमें क्या है, बिकॉज ऑफ पोर्स से थे, एक तो मेरा इलास्टिक मॉडल्स कम हुआ, उससे फ़ायदा क्या होगा, मेरा लोड ट्रांसफ़र बोन पे बढ़ जाएगा। अब पोर्स सीमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं मुझे, मैंने लिया, स्क्रू से फिक्स किया, मेरे बोन को ग्रो करने के अंदर जगह मिल रही है, तो फिक्सेशन बायोलॉजिकल हो गई, तो लोड ट्रांसफर बेटर हो गया, फिक्सेशन बेटर हो गई, तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ बॉडी। उससे इफेक्ट क्या होगा, मेरे इम्प्लांट की लाइफ बढ़ जाएगी, बिकॉज लोड ट्रांसफर बेटर हुआ, बायोलॉजिकल फिक्सेशन हुआ, कोई सीमेंट नहीं लगा रहा हूँ मैं। सीमेंट लगाने से क्या होता है, उसकी बोन जो होती है ना, एक्सोथर्मिक एक्शन होता है, तो बोन ग्रो नहीं कर सकती उसमें, तो मैंने अवॉइड कर दिया। और फिर हमने इसकी एनिमल स्टडी भी करी बोन ग्रोथ की, तो हमने रैबिट्स में किया 3 महीने का, क्योंकि हमको शीप वीप नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास एनिमल हाउस नहीं है, तो हमने क्या पाया, जो 3 मंथ्स के अंदर फीमेल रैबिट्स के अंदर ज़्यादा बोन ग्रोथ कंपेयर टू मेल, तो फीमेल हैज एडवांटेज ऑफ अडेप्टेबिलिटी, मेल्स में होता है, रेट कम था, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, तो दिस वॉज देयर। तो अगेन आप जो मटेरियल की नेचुरल प्रॉपर्टीज कैसे अडेप्ट कर सकते हो, जैसे टाइटेनियम नोन फॉर स्ट्रेंथ, तभी इम्प्लांट में यूज आता है, एरोस्पेस में यूज आता है, यू कैन से दिस इज फ्लेक्सिबल। तो विथ 3D प्रिंट यू कैन चेंज द नेचुरल बिहेवियर मटेरियल ऑल्सो। तो टाइटेनियम, फ्लेक्सिबल टाइटेनियम, जस्ट यूज लैटिस स्ट्रक्चर्स, तो वो एक नेचुरल बिहेवियर चेंज कर, उसको आप अडेप्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी आप कुछ स्पंज में पानी डालते हो तो पानी सोख लेता है ना, दिस इज मेटल इम्प्लांट, वी डिजाइन इट। अब इसमें कैपिलरी इफेक्ट देखो आप, ब्यूटीफुल कैपिलरी इफेक्ट, हमारी बोन इम्प्लांट लगा, उसके अंदर प्रोटीन फ्लो करना चाहिए, ब्लड फ्लो करना चाहिए ना, तो ये टिश्यू ग्रोथ होएगा, तो यू कैन सी दिस। वेरी फास्ट, मेटल के अंदर देखो कैपिलरी इफेक्ट आ रहा है, तो दिस यू कैन यूज दिस लैटिस, दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, नेचर ने दिया है, हम भूल कैसे रैप नहीं कर, अब टेक्नोलॉजी हमको दे रही है उसको कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। So this is the workflow that we use for implant designing. Customize करते तो we take a patient scan data, convert 3D model, then designing, FEA analysis, manufacturing, testing. So this is our own implanted patient. So this is our human cancer, तो अंदर का स्पॉन्जी बोन होता है ना, तो you can see this one. So we started with single porosity. इसमें क्या पोर से पूरा कॉमन है, बट यार हमारी बोन तो हेट्रोजेनस है ना, तो देन धीरे धीरे हमने अपने आप को अपग्रेड किया, तो वी गेट इनटू कैपेबिलिटी देन वेयर वी कैन प्रिंट वेरिएबल पोरोसिटी। फ़ायदा क्या है, बिकॉज हमारी बोन के डिफरेंट पोर साइजेज हैं, स्टिल देयर आर नो कंसर्न्स बिटवीन साइंटिस्ट रिसर्चर्स विच बोन साइज इज ऑप्टिमम बोन ग्रोथ। सम से 200 माइक्रॉन, सम से 800 माइक्रॉन, कोई बोलता है 400 माइक्रॉन का पोर साइज बेटर है बोन ग्रोथ के लिए। इसमें मैंने मेरा दिमाग शब्द दिया 0.4 अच्छा है, तो पूरा पोर साइज 0.4 कर दिया।
बट डिपेंडिंग कहाँ का बोन है, शायद 0.5 अच्छा हो। हियर द पोर साइज इज वेरिएबल, कहीं 0.4 है, कहीं 0.6 से 0.8 है। समवेयर इट विल मिमिकिंग द ह्यूमन बोन स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर जो उसको बेटर होगा, ठीक है। तो ये दिस कप विच को यहाँ का जब रिप्लेसमेंट होता है यहाँ पे लगता है, इसको एसेटोरल कप, सिंगल पोर से वेरिएबल वेलोसिटी, ये पेशेंट्स में लगे हुए हमारे खुद के इम्प्लांट। तो मैंने बताया था ना कि जब प्राइमरी इम्प्लांट फेल हो गया, रिमूव किया तो बोन बाहर निकाल के आ गया। तो ये सपोज ये बोन इम्प्लांट निकाला हमने, कप निकाला, ये बोन बाहर आ गया। अब सोल्यूशन क्या है, वो तो गड्ढा हो गया ना, दोबारा मुझे ये कप लगाना है तो पास में बोन नहीं है तो निकल के बाहर आ जाएगा। सोल्यूशन क्या है, टिपिकल क्या सोल्यूशन है कि कई बार जो अनक्लेम्ड बॉडीज़ होती हैं, जो एक्सीडेंट्स वगैरह में कोई क्लेम नहीं करता, उनकी बोन रिमूव कर, देयर इज अ बोन बैंक, वो -65 डिग्री में फ्रोजन उसमें रहती हैं। डॉक्टर को ज़रूरत हुआ अगर उनके बोन बैंक है तो दे टेक इट आउट, मैश इट, यूज इट, यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। कब फिक्स हो गया, 4-5 साल चल जाएगा। फिर क्या होगा कि बोन तो -65 डिग्री में है, प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, आपको दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी। ऑर्डिनेट सोल्यूशन क्या है, यू हैव दिस काइंड ऑफ इम्प्लांट्स। फिर यूज़ क्यों नहीं करते हैं, बहुत महंगा है। ये छोटा सा इम्प्लांट मार्केट में 1.25 लाख के आसपास का मिलता है, 80,000 to 1. इसके एडिशनल में ये तो है, इसके भी पैसे लग गए, 50-60 हज़ार का ये भी आएगा, तो 2 लाख के इम्प्लांट लगे। सो स्टिल इन इंडिया अफोर्डेबल दैट उतना नहीं है कि 2 लाख के एक इम्प्लांट। देन देयर सर्जिकल कॉस्ट भी होता है, हॉस्पिटलेशन कॉस्ट भी है, तो एक्सपेंसिव है। तो व्हाट वी डिड, वी डेवलप दिस टेक्नो, अभी तक इम्पोर्ट ही हो रहे थे। हमने टेक्नोलॉजी डिफरेंट सिचुएशन में लगता है, शेल है, बटरस है, शिम है, केज कंस्ट्रक्ट है, ये किए, वी हैव पेटेंट फॉर दैट एंड वी हैव ट्रांसफर दिस टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्री। तो जेके ग्रुप आपने सुना हो, जेके टायर, जेके पेपर्स वगैरह, दे आर कमिंग टू मेडिकल, उन्होंने टेक्नोलॉजी है। सो व्हाट वी एक्सपेक्टिंग कि 1.25 लाख का 70-80 हज़ार में तो मिलेगा, एटलीस्ट कुछ तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगा। पहले 100 लोग अफोर्ड कर पाए, कम से 130 तो अफोर्ड कर पाएंगे। मैं ये नहीं बोलता सस्ता होएगा, बट अफोर्डेबिलिटी विल इंक्रीज। सो दिस हैज़ बीन कमर्शलाइज्ड। तो ये केस मैंने बहुत पहले किया था, सिमिलर ऑगमेंट ही था, बट पिछली बार का इधर क्या था, कप में स्पेस वॉज, बोन रिम वॉज वेरी लेस, तो जो साइजेस जो आ रहे थे वो फिट नहीं बैठ रहे थे। तो पेशेंट का हमने बहुत साइज, जैसे स्क्रू ही फिक्स हो जाए उतना ही थिक रखा, एंड देन वी डिड द सर्जरी। वी डिड मतलब डॉक्टर को दिया था, डॉक्टर ने सर्जरी करी थी, हमने नहीं करी थी। देन दिस इज अनदर ब्यूटीफुल इम्प्लांट, नेक्रोसिस, अभी इंडिया में नहीं आता है। ये हुआ क्या, आपके फीमर हेड में यहाँ पे फीमर होता है, ब्लड सप्लाई कम हो गई, तो आपको बहुत इनिशियल स्टेज में मालूम चल गया, तो डॉक्टर्स क्या करता है, दे ड्रिल माइन्यूट होल्स, तो ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाती है। अगर बहुत स्टेज 3 क्रॉस कर गया, 4 क्रॉस कर गया, देन आपको हिप रिप्लेस करना पड़ेगा। ब्लड सप्लाई कम हुई तो आपकी कार्टिलेज वेयर आउट होने लग गई, हिप रिप्लेस कर दिया, सोल्यूशन है, वेरी गुड। लेकिन 15 साल बाद क्या, आपको दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दिस सिमिलर काइंड ऑफ इम्प्लांट वाज अवेलेबल इन यूएस, यूके, बट नॉट इन इंडिया। सो हमने वो इम्प्लांट आइडिया उससे लिया, बट वी मॉडिफाइड इट। हमने क्या, बिकॉज वी आर 3D प्रिंटिंग, हमने बीच में कैनुलेशन प्रोविजन कर दिया और बीच में होल डाल, जिससे स्टेम सेल्स इंजेक्ट कर सकते हैं। तो दिस वॉज इम्प्लांट इन पेशेंट, so this was the implant and we had a patent for this, and अभी इसको सिप्ला को ट्रांसफ़र किया है, तो प्रॉब्ली आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल्स दिस विल बी अवेलेबल इन इंडिया। एंड कोरोना में बहुत सारे पेशेंट को कोरोना हुआ था, उनको इश्यूज़ आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे इम्प्लांट अवेलेबल नहीं था, बट मे बी 2-3 डाउन द लाइन हमको ये मार्केट में मिलने लगे। दिस अनदर इम्प्लांट दैट नॉट अवेलेबल इन इंडिया, द टेक्नोलॉजी दिस ट्रांसफर जेके ग्रुप। तो ये आपका बोन है, इसमें ट्यूमर हुआ है, ये यहाँ पे बोन नहीं है, तो आपको कस्टमाइज इम्प्लांट बनाना पड़ेगा, पेशेंट का डेटा लोग करोगे। कस्टमाइज इम्प्लांट वेरी एक्सपेंसिव, 5-6 लाख से कम का नहीं मिलता हिप का। तो बट इफ दिस इज अवेलेबल, दिस कैन बी फिट, और गोले कप को फिट, या बोन चाहिए, बोन नहीं है, तो व्हाट दे डिड, यहाँ से ईशम पोर्शन से डाल के ड्रिल करके डाल देंगे, यहाँ से फिक्सेशन ले लेगा स्क्रूज के साथ में। सो यू हैड ए कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन अवेलेबल रेडीमेड, जो कि पेशेंट को 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा। कस्टमाइज इम्प्लांट बने हफ्ते 10 दिन का टाइम लगता है, देन देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस आल्सो रिक्वायर्ड। सो देन वी आर ऑल्सो इनटू स्पाइनल इम्प्लांट्स। स्पाइनल इम्प्लांट्स में जैसे आपको डिस्क डिजेनरेट हो गई, कहते हैं डिस्क मन के खिसक गए, सुनना होगा ना। तो क्या है, बेसिकली आपकी जो डिस्क है ये बाहर आगे बल्ज हो गया है ड्यू टू ट्रॉमा, एज के फैक्टर्स भी आते हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है आज की डेट में, तो बैठे रहते हैं ना, तो कमर दर्द करती है, तो ये पिंच करती है। अब आपने क्या करोगे, आप जाओगे फिजियोथेरेपिस्ट का, योगा करोगे,
सब कर लिया, नहीं हुआ, डॉक्टर के पास गए, बोला जी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दे यूज दिस काइंड ऑफ पोस्टीरियर लुम्बर इंटो बॉडी, शॉर्ट फॉर्म पीलिफ बोल देते हैं, टीलिफ ट्रांसफॉर्म लुम्बर बॉडी। पी और टी क्या करता है, कहाँ से आप इंसर्ट कर रहे हो। पी मतलब पीछे से स्पाइन में इंसर्ट करोगे, टी साइड से, ए होता है फ्रंट से। तो फ्रॉम विच डायरेक्शन इंसर्टिंग, इम्प्लांट आपका चेंज हो जाता है। और इस यहाँ एक कट करके इम्प्लांट डाल दिया, फिर दो वर्टिब्रा मिलकर आपकी सिंगल हो जाएगी। तो द मोमेंट आप दो वर्टिब्रा में आप फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हो। सपोज अभी आप ऐसे घूम पा रहे हो, यहाँ पे इम्प्लांट लग गया तो आपको ऐसा होना पड़ेगा, ठीक है। तो और स्पाइन समथिंग उसका कोई रिविजन सर्जरी करना नहीं चाहता है, बिकॉज लॉट ऑफ नर्व्स आते हैं ना। एक नर्व का गलत हुआ, मान लो यहाँ से पैर नहीं चला, तो विजुअल लैटिस इंटीग्रेशन बेटर हो जाएगा हैं, और फ्यूजन बेटर होगा। तो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड्स। तो ये भी हमने दो कंपनी, इनफैक्ट जेके ग्रुप को और यूपीएस लक्ष्मी है रोहतक में, तो दे ऑल्सो वांट टू कम मेडिकल, तो उन्होंने लिया है। सो दिस विल वेरी सून इन विल कम टू मार्केट। सो देन हम कस्टमाइज इम्प्लांट भी करते हैं। कस्टमाइज इम्प्लांट मतलब कि मार्केट में जी कुछ अवेलेबल नहीं है ना, एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। तो आप लोगों ने ब्लैक फंगस सुना है, कोरोना के टाइम बहुत हुआ था लोगों को, हैं। वो 2020 की बात है, हमने 2016 में ब्लैक फंगस, इसका टेक्निकल म्यूकोमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन होती है, उसका केस 2016 में किया था। तो दिस वाज द इन्फेक्शन पार्ट। अब इधर का आपको इम्प्लांट रेडी मिलता नहीं है। आप क्या करते हो, हमारे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोन होती है, देखा, टीबिया के साथ में एक पतली सी बोन होती है, उसके बाद आदमी जी सकता है, दौड़ नहीं पाएगा लेकिन चल पाएगा ना। तो नेचर ने हमें बहुत अच्छी इंजीनियरिंग करी, कुछ ऐसी बोन दे दी जिसको हटा भी दो तो भी आप सर्वाइव कर सकते हो। रिब्स हो गया, एक आध रिब टूट जाए तो भी आदमी कर सकता है ना। तो अगर यहाँ से बोन निकल के फिट कर देते हैं, बट काम चलाओ सोल्यूशन है। तो हमने क्या किया, पेशेंट का स्कैन लिया, कन्वर्ट किया, देन वी डिज़ाइन दिस इम्प्लांट फॉर दिस इन 2016, वे बिफोर दिस वन। सो अगेन दिस अनदर केस, जो आप लोग हेलमेट नहीं चलाते हैं उन लोगों के लिए सबक है। ही वॉज अ टेलीकॉम ऑपरेटर, नॉट वेयरिंग हेलमेट, पोल से टकराया, दिस वॉज सिचुएशन ही गॉट इन टू, पूरा फेस डिसफिगर्ड है। तो कभी भी ऐसा एक्सीडेंट केस में क्या होगा, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पहला आपकी जान बचाएगा, ठीक है। फिर उसको 6 महीने रिकवर होने, फिर लगा ठीक करते हैं। अब एक्सीडेंट हुआ क्या था पूरा देखते हो सकते हो। तो उसका एक आँख अंदर, आँख रखे, वो फ्लोर ऑर्बिटल फ्लोर होता है, ये टूट गया, तो आँख नीचे आ गई थी। अब उसको अलाइन करना है। अब एक्सीडेंट के टाइम पे डॉक्टर को जो ठीक लगा उसने किया, तो देयर वाज मालन्यूट्रिशन ऑफ बोन, उसको जो टेबल अवेलेबल था कि बोन गलत जुड़ गई 6 महीने के टाइम में। आपको ऑर्बिटल फ्लोर डिज़ाइन करना है तो पहले आपको इसको करेक्ट करना पड़ेगा। उसको करेक्ट करने हमने ये प्लेट बनाई। अगर ये प्लेट ढंग से अलाइन नहीं होती है तो आपका ऑर्बिटल फ्लोर जो है वो अलाइन नहीं होगा, एंड देन ऑप्टिक नर्व्स बिहाइंड दैट। तो इसमें क्रिटिकलिटी, और मैक्सोफेशियल में काम करता है तो आपका टॉलरेंसेस आर वेरी लेस, 0.5 mm का डिफरेंस बिना मेक एंड ब्रेक कर सकता है। सो दिस वॉज डन, एंड दिस वॉज ऑन 2016 में 2 केस थे। देन वी डिड सम मैंडिबल केसेस, कैंसर हुआ, किसी पेशेंट का जबड़ा निकाल दिया है, तो डॉक्टर ने ट्रे काइंड ऑफ प्लान में इसमें यहाँ से फिबुला या रिब लेता, फिल करता, 2-3 साल छोड़ता, देन ही रिमूव इट, देन इट बिकम पार्ट ऑफ द बोन, ठीक है। ये ध्यान से देखो इस इम्प्लांट को। देन सिमिलर काइंड ऑफ केस मैंडिबल है, बट द इम्प्लांट टोटली डिफरेंट। पहला वाला याद है ट्रे काइंड का था, इम्प्लांट टोटली। सो ऐसा नहीं कि यू आर बीन फोर्स्ड टू यूज व्हाट इज अवेलेबल, यू कैन यूज योर ओन क्रिएटिविटी टू व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन दैट यू थिंक। सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम बट द इम्प्लांट टोटली डिफरेंट, उसको तो निकाल दें, इसको परमानेंटली छोड़ना है। तो ये पेशेंट का हुआ, एंड दिस वॉज द रिजल्ट। अगेन दिस वॉज द बेंचमार्क केस इन इंडियन हिस्ट्री। तो हमारे पास एक केस है, उससे पहले हम सिर्फ फेशियल कर रहे थे ना, तो ऑर्थोपेडिक से एम्स दिल्ली के अप्रोच किया गया। तो हमने वी टुक सीटी स्कैन डेटा, फिर जब हमने फेल्ड इम्प्लांट्स को निकाला तो वी गॉट सिचुएशन लाइक दिस। तो यहाँ पे एस्ट्रोब्लम होता है ना, इस पेशेंट का ये था ही नहीं, और गोले गोला वाला इम्प्लांट ना एस्ट्रोब्लम कप, वो कहाँ फिक्स करोगे। फिर उसके बाद हमने एक्सरे मंगाया, तो दिस वाज कि वो इम्प्लांट पूरा फेल, स्क्रू कहाँ पे, कब कहाँ पे। दिस वाज अ ट्रिकी सिचुएशन, बिकॉज ये गलत हो तो पहले बेड रिडन है, लॉट ऑफ नर्व्स एक्सेट्रा। तो फिर विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स वी डिजाइन इम्प्लांट। हमने क्या किया, इसके बैक से फिक्सेशन दिया, कप लगाएंगे तो जगह नहीं है, बैक से और या फ्रंट से फिक्सेशन देके फिर कप किया, एंड दिस वाज इन 2018। दिस वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। देन एक और ये केस है, आई थिंक दिस लास्ट केस गोइंग टू शो। इसमें पेशेंट को कैंसर था यहाँ का। अब कैंसर है तो ये बोन कट होएगी,
आपको कब फिक्स करना है, गोले वाला इम्प्लांट था ना, अब बोन नहीं है तो फेल हो जाएगा, तो हमने सपोर्ट इम्प्लांट बनाया उसका एंड दिस डन। तो उसका क्या था, कप लगेगा पीछे, सपोर्ट करेगा वो, ठीक है। एंड दिस इज द वीडियो ऑफ ए पेशेंट। सो अभी तक जितने हमने किसी चार्ज नहीं किया डन और फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस वॉज अ पेशेंट फ्रॉम कश्मीर, सो यू कैन नॉट फाइंड आउट वेदर शी इज हैविंग एनी इम्प्लांट और नॉट। So this kind of solutions are possible with the technology. So then again we did a lot of technology. हमारा as a CSIR, whatever we do, it must reach to masses. तो इंडस्ट्री एक बीच में स्टेज है हमारी, हम इंडस्ट्री को हम खुद बना के बेचते नहीं हैं। कस्टमाइज कैसे वी डू वंस और ट्वाइस इन अ ईयर फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट टू पुर ओनली, बट द मास बेसिक एम इज टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्री, वो हम कमर्शलाइजेशन करेगा बिकॉज लॉट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर देयर इन मेडिकल। तो वी डिड ट्रांसफर टू फोर्ब्स, जो शपूजी पालनजी ग्रुप की कंपनी, देन यूपीएस लक्ष्मी, देन जेके ग्रुप टू। तो अभी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं हमारी, दे विद इन 1 or 2 ईयर डाल आपको मार्केट में दिखने मिलेंगी एट अफोर्डेबल रेट कंपेयर टू। देन देर आर वी ऑल्सो सपोर्ट अदर साइंटिस्ट हु वांट टू यूज 3D प्रिंटिंग फॉर देयर वर्क। सो दिस इज द फिनिशिंग वर्क, नैनोमेट्रिक फिनिश फ्रॉम ए 3D प्रिंटेड टाइटेनियम, which is done by Dr. Neha Katrin in our lab. Then we are also supporting other scientists for supercapacitor application. So here my role is only to support those. We give printing, they give the file, we print them for that. So this is again for microbial fuel cell. So they came up with the requirements. We developed different electrode with different lattice structures, and they check the performance, how they are performing, what affect different lattices for their microbial reactor. So then we, like the people in there are also into like water. So we have started printing coppers, and copper is something which is very difficult to print. अभी होता क्या है, if you are printing titanium steel, आपने you have input 250 watts of laser, तो 230 absorb करेगा। कॉपर में क्या 300 watt दोगे, वो 80 watt ही absorb करेगा, but it's too much reflective, तो very difficult to print material में आता है। But we have done experimentation and with some kind of parameter we are able to print pure copper in our lab. And copper is with the advancement of EVs is going to be new gold. कॉपर का यूसेज बढ़ेगा तो उसके प्राइसेस भी जाएंगे। सो दिस वाज द टीम, कुछ पास्ट हैं कुछ प्रेजेंट हैं। तो प्रशांत इज़ हेयर, सो ही इज़ PhD स्टूडेंट। देन देयर पीपल हु आर वर्क इन डिफरेंट डोमेन्स एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में साथ में, उनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। सो थैंक्स। ये हमारे कुछ मेक इन इंडिया स्वस्थ भारत की तरफ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो वी होप कि आपको लोगों को, नॉट आप लोग, किसी को नाम लगे वैसे तो इसको ज़रूरत हो उसको अफोर्डेबल रेट पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इम्प्लांट्स इंडिया में अवेलेबल हो। थैंक यू। क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम।